Hey guys, welcome to Vision XC classes. Today I'm going to discuss a very important topic for your GATE exam, which is structure property correlation of elastomers. वीडियो को skip मत करके देखिएगा. I can assure you, after watching this video, you will easily solve GATE questions of this topic. So start करते हैं टॉपिक को. बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा. A lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, Vision XC classes आप लोग के लिए लेकर आए हैं GATE इंजीनियरिंग साइंसेस कोर्सेज. अगर आप लाइफ में GATE का सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, you can refer our course. इस कोर्स में सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे. आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, न्यूमेरिकल वर्कशीट्स मिलेगा. You can avail this course only at 399. So we all love to watch the FIFA World Cup, right? And यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ये बॉल है, it is branded by Adidas and it is very stylish ball. But this stylish ball is made up of 3 components. जो पहला component है वो है हम लोग का polyurethane and इसको हम लोग यूज करते हैं जो outermost covering है फुटबॉल का, इसको बनाने में. क्यों polyurethane यूज किया जाता है? Because polyurethane has very good abrasion resistance as well as good impact resistance and it has very low water absorption. So it is the best candidate for outermost covering. Our second component is nylon. It is used in between the bladder and outermost covering. क्यों इसको यूज किया जाता है? क्योंकि नायलॉन को जब यूज करते हैं तब ये बाउंस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फुटबॉल इज ब्लडर, राइट? तो ये जो ब्लडर है ये बनता है ब्यूटाइल रबर से. एंड जो ब्यूटाइल रबर होता है ये बहुत ही लो एयर परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है. सो इसीलिए अगर हम इसके अंदर एयर को भरेंगे तो एयर जो है ब्लडर को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आएगा इजीली. तो इसीलिए हम लोग ब्लडर को बनाते हैं ब्यूटाइल रबर से. सो फ्रॉम दिस स्लाइड वी कैन सी दैट रबर्स एंड पॉलीमर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न डे एप्लीकेशन. सो इन दिस लेक्चर हम लोग देखेंगे कि कैसे रबर्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. एंड देन हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस रबर एंड स्पेशलिटी रबर. एंड देन वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर इन डिफरेंट सर्विस कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ऑयल. एंड एट लास्ट वी विल अरेंज all the values of all the rubbers in a suitable format. So let's jump to the next slide. We can classify rubber in many aspects. In this slide we can see that if the backbone of the rubber contains unsaturated double bonds, then वो rubber का name के last में R आता है. Chloroprene rubber, styrene rubber, natural rubber. Whereas अगर उस जो rubber है उसका backbone में अगर saturated single bond आता है, that means no double bond, then the rubber will be termed as M type rubber. That means methylene type rubber, EPDM, EVM. So this is the primary classification. Apart from this primary classification, और भी classification होता है जैसे कि Q type rubber, O type rubber and U type rubber. Q type rubber means जो backbone है उसके अंदर silicon group. So for that reason it is termed as Q type rubber. And O type rubber means जो backbone है उसके अंदर oxygen group present. And lastly जो U है इसका मतलब जो backbone है rubber का उसके अंदर urethane group present हो तब उस rubber को हम लोग बोलेंगे U type rubber. So this is the secondary classification. So in this slide मैंने all the R type rubbers का list दिया है. तो you can see that in these rubbers जैसे कि natural rubber और isoprene rubber, butadiene rubber, SBR, इस सभी का बैकबोन में मेरे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है जो कि अनसैचुरेशन को दर्शाता है. सो फॉर दैट रीजन ऑल दिस रबर्स हैव आर इन देयर लास्ट, सो दे आर नोन एज आर टाइप रबर. सो इन दिस स्लाइड मैंने ऑल द एम टाइप रबर्स का लिस्ट यहाँ पे दिया है. एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन ईपीडीएम, ईवीएम, एएम, एसीएम, एफकेएम एंड क्यूएम देयर आर नो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स इन द बैकबोन ऑफ द रबर. सो फॉर दैट रीजन इनका जो लास्ट के नाम में मेरा एम आता है व्हिच स्टैंड्स फॉर एम टाइप रबर. सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. वन इज जनरल पर्पस रबर, सेकंड वन इज स्पेशल पर्पस रबर एंड थर्ड वन इज स्पेशलिटी रबर्स. सबसे ज्यादा ग्लोबली प्रोडक्शन किया जाता है जनरल पर्पस रबर्स. एग्जांपल क्या है जनरल पर्पस रबर्स का? मोस्टली ऑफ द आर टाइप, जितना भी आर टाइप रबर होता है वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस रबर. एग्जांपल एनआर नेचुरल रबर, एसबीआर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, बीआर ब्यूटाडाइन रबर एंड आइसोप्रीन रबर. एंड द सेकंड वन इज आवर स्पेशल पर्पस रबर. द मोटो ऑफ दिस रबर इज टू कैटर सर्टेन कॉम्बाइंड एप्लीकेशन. जैसे कि आपका मान लीजिए फ्यूल रेजिस्टेंट रबर हो गया, हीट रेजिस्टेंस रबर हो गया, एटसेट्रा. इनके एग्जांपल्स क्या है आपका? जैसे क्लोरोप्रीन रबर, आईआईआर जैसे ब्यूटाइल रबर, ईपीडीएम, एनबीआर. बट द थर्ड वन इज आवर स्पेशलिटी रबर. इनका प्रोडक्शन सबसे कम होता है ग्लोबली. एंड जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है दिस रबर इज यूज्ड टू कैटर एक्सट्रीम एप्लीकेशन. जैसे कि आपका एक्सीलेंट ऑयल रेजिस्टेंस हो गया, एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस हो गया, एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस हो गया, मतलब एक्सट्रीम. जैसे इनका एग्जांपल्स क्या है आपका? एक्रेलेट रबर, फ्लोरोकार्बन रबर, ईवीएम, सिलिकॉन रबर एंड हाइड्रोजनेटेड ब्यूटाडाइन रबर. अगर आप कभी इंडस्ट्री में जाते हैं यू विल सी दैट इन इंडस्ट्री यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज परफॉर्मेंस. सो दैट मींस प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो is very important in industry. So from the graph we can see that the general purpose rubbers are having less performance but the price is cheap, and the specialty rubbers having higher performance and higher the price. जो स्पेशल पर्पस रबर है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है. तो इसीलिए जो जनरल पर्पस रबर है ये इतना ह्यूजली प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली. लेकिन जनरल पर्पस रबर्स उतना कैपेबल नहीं होते हैं एक साथ दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें. जैसे कि इन ऑटोमोबाइल्स वी नीड रबर्स अराउंड इंजन फॉर ऑयल रेजिस्टेंस एप्लीकेशंस. ऑटोमोबाइल्स में बहुत तरीके का ऑयल यूज होता है जैसे कि इंजन ऑयल, गियर बॉक्स ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, फ्यूल ग्रीस एंड मेनी मोर.
बट ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशंस द हाई हीट विल बी जनरेटेड ड्यू टू द इंजन। जैसे कि इंजन का खुद ही टेम्परेचर हो जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड उसका सराउंडिंग में चला जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी नीड रबर्स दैट आर बोथ ऑयल एंड हीट रेजिस्टेंट। सो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज हम लोग यूज करते हैं स्पेशल पर्पस रबर्स लाइक एनबीआर। सो अभी तक हम लोग स्पेशलिटी रबर्स, जनरल पर्पस रबर्स एंड स्पेशल पर्पस रबर्स का एक ओवरव्यू देखे, लेकिन अगर हम लोग को और भी एक्यूरेटली उनका क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, सो हम लोग को इस ग्राफ का हेल्प लेना है। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। इन दिस ग्राफ we have plotted the heat resistance along the y-axis and the oil resistance along the x-axis, and जो oil resistance को हम लोग swelling के term पे लिखे हैं। So what is swelling? Swelling का मतलब if you put a rubber in oil and after that the rubber resist it or the oil is absorbed by the rubber, we have to see. So अगर ज्यादा absorption होगा तो ज्यादा swelling होगा, that means the rubber is less resistant to the oil. So from the graph we can see that most the R-type rubbers comes under the low heat resistant zones. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जितना भी आर टाइप रबर है उनके अंदर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होता है। सो दैट मींस ड्यूरिंग हाई हीट ऑक्सीजन और ओजोन कैन अटैक इजीली द रबर्स एंड ब्रेक देयर चेन। एंड आफ्टर दैट वी कैन सी दैट इन एक्सट्रीम राइट, आपका जो इस साइड में, ऑल द रबर्स आर नॉट ऑयल रेजिस्टेंस। देखिए जितना भी ये रबर्स है वो ज्यादा ऑयल रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली दे आर हाइड्रोकार्बन, सो दे आर नॉन पोलर। बट इफ वी इंक्रीज द पोलरिटी यहाँ से इस तरफ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, द ऑयल रेजिस्टेंस इंप्रूव्स ड्रास्टिकली। सो अगर आपका गेट में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दैट व्हिच ऑफ द रबर इज मोस्ट ऑयल एंड हीट रेजिस्टेंस, आपको अगर चार ऑप्शन दे दे तो आपका आंसर क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको एफकेएम दे दिया, एचएनबीआर दे दिया, आपका आईआईआर दे दिया, ईपीडीएम दिया, तो आपको हमेशा देखना है कि फ्लूरो इलास्टोमर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मिथाइल विनाइल फ्लोरोसिलिकॉन सबसे ज्यादा होता है। तो ये दोनों जो है सबसे बेस्ट ऑयल रेजिस्टेंट एंड हीट रेजिस्टेंस दोनों का ही कॉम्बाइन ये प्रॉपर्टी शो करता है। एंड अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए कि अरेंज करने के लिए दे, जैसे कि आपको क्लोरोप्रीन रबर दे दिया, आईआईआर दे दिया, ईपीडीएम दे दिया, एनबीआर दे दिया, एंड बोला कि इंक्रीजिंग ऑयल रेजिस्टेंस के टर्म पे लिखो, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका जो है इंक्रीजिंग होगा। अगर बोला है तो आपका जो है सबसे फास्ट में होगा आपका ईपीडीएम, देन होगा आपका आईआईआर, देन होगा आपका क्लोरोप्रीन रबर, एंड सबसे ज्यादा जिसका ऑयल रेजिस्टेंस है वो आपका एनबीआर लास्ट में, राइट। दिस स्लाइड विल गिव यू a lot more insight about the structure property correlation of rubber. Once if you understand these, then you don't have to mug up. ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं कि from left to right polarity increases, and in this diagram the red dot means poor performance, the yellow dot means fair performance, and the green dot means excellent performance. In case of natural rubber, इसका जो low temperature mechanical properties है बहुत ही excellent है, because इसका जो Tg है वो बहुत ही low है, which is of -72 degree centigrade. But as it does not contain polar groups, its oil resistance is very poor. Whereas in case of fluoroelastomers, we can see that its low temperature mechanical properties is very poor, because इसका जो Tg है as compared to natural rubber is quite high, which is of -20 degree centigrade. But as it contains polar grooves into its backbone, so we can see that its oil resistance properties is very excellent. लेकिन इसका जो बैकबोन है उसके अंदर कोई भी unsaturated bonds ना होने के कारण इसका जो thermal stability है बहुत ही good है. So in this way we can predict all the performance of all the elastomers. And one thing we can note here, अगर हम लोग जो acrylonitrile butadiene रबर है इसके अंदर हम लोग अगर ब्यूटाडाइन रबर का, क्योंकि ये कोपॉलीमर है acrylonitrile प्लस ब्यूटाडाइन रबर का जो लो टेम्परेचर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है बहुत ही गुड है, क्योंकि इसका जो Tg है बहुत क्वाइट लो है, एंड जो acrylonitrile butadiene रबर है इसका जो Tg है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्यूटाडाइन रबर, व्हिच इज ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम लोग ब्यूटाडाइन रबर का परसेंटेज इस कोपॉलीमर में बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इसका जो परफॉर्मेंस है वो इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन प्रिडिक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ elastomers as well as copolymer elastomers. Okay, right. So from this side we can see a relationship between the structure of elastomer and the density of the elastomer. So इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, in principle elastomers having saturated backbone having lesser density than the unsaturated ones, and इन सब के अंदर elastomers having heteroatoms will have the highest density. जैसे कि आपका क्लोरोप्रीन रबर हो सकता है, फ्लोरोएलास्टोमर्स हो सकता है, एक्रिलिक रबर हो सकता है, and like that. Okay. So जैसे कि हम लोग को पता है कि butadiene rubber unsaturation is highest, so that means it will form more crosslinks, whereas in case of EVM there is no unsaturation, so it will form less crosslinks than butadiene rubber, right? So that means जब हम लोग का unsaturation ज्यादा होता है तब crosslink density भी ज्यादा होगा, and that means if the higher the crosslink density, that means the vulcanization rate should be higher, and higher the unsaturation content, higher will be the carbon black reinforcement. And ये तो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि जब मेरा unsaturation बढ़ता है तब at higher heat जो ऑक्सीजन एंड ओजोन एंड यूवी का अटैक है वो बढ़ जाता है, एंड ये जो है कम होता है इन केस ऑफ एम टाइप रबर्स, बिकॉज देयर इज नो सच अनसैचुरेशन। जैसे कि हम लोग को पता है लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक, सो फ्रॉम द डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रॉम मूविंग
left to right solubility parameter increases. So for higher solubility parameter rubber, we need polar solvent, and for lower solubility parameter rubber, we need non-polar solvent. For example, EPDM and oil दोनों का सेम solubility parameter है लगभग. So इसके चलते ये दोनों का जो solution है can act as a glue and can incorporate largest amount of solid filler. So as per ASTM standard, if we pour oil number 3 on rubbers at 150 degree centigrade for 70 hours, and after that we will get swelling values for different rubbers. So these values are plotted in this graph. So यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो NBR है, as हम लोग पहले डिस्कस की, इसके अंदर पोलर ग्रुप्स होता है, so उसके कारण इसका स्वेलिंग इज वेरी लेस. बट EPDM है, इसके अंदर कोई पोलर ग्रुप्स नहीं होने के कारण इसका स्वेलिंग ज्यादा होता है. लेकिन अगर हम लोग चाहे तो EPDM का जो सॉइल स्वेल है इसको कम कर सकते हैं. इफ वी सिंपली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर वैल्यू ऑफ EPDM, हम लोग का जो है EPDM का जो स्वेलिंग का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा. सो इफ वी सिंपली डूइंग द पोलर मॉडिफिकेशन ऑफ EPDM, देन वी कैन गेट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. सो द पोलर मॉडिफिकेशन कैन बी डन बाय ग्राफ्टिंग मैलिक एनाइड्राइड. सो लाइक दैट वी कैन अचीव द लो स्वेल इन पोलर EPDM. सो अभी तक जितना भी चीज हम लोग डिस्कस किए हैं वो सभी इस चार्ट के अंदर समरी फॉर्म में है. अगर आप चाहे तो इसे पॉज करके स्टडी कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट द फर्दर अपडेट्स.